Myself, engineer Yashdeep Sachdeva. Currently, I am in CPWD, Central Public Works Department. It is a department through engineering services, the Indian Engineering Services examination, which UPSC conducts. In the year 2019, I appeared for this examination and I got the All India rank 42 in mechanical engineering. Through that All India rank, I got the selection in Central Public Works Department, which was my first choice department. After the selection in CPWD, I went through the training program, which was proposed to be 1 year, but due to COVID waves, our training was cut short to 8 months. And right now, I am posted in a project in New Delhi. It's a project of Central Armed Police Forces. It's their medical institute, which is being constructed for them, and it is being controlled and monitored by Ministry of Home Affairs. So it's a privilege for me to be able to work in such a project of national importance. So now I'll be taking you all through my UPSC journey, the journey of preparation, the journey of training, and what all needs to be done for the examination point of view, and after that. So let's go through the journey point now. All those engineers, because this examination is mainly for engineers, engineering departments participate in these examinations, and whatever engineering stream you are, or whatever engineer you are, there are only four streams which take these examinations, which is civil engineering, mechanical engineering, electrical engineering, and electronics and communication engineering. So even if you are a marine engineer or computer science engineer, if you need to appear for this examination, you need to appear through one of these four engineering branches. So uh, this was the brief idea of the UPSC Engineering Services examination uh, uh, applicability. This exam, as civil services, is distributed as into prelims, mains, and interview stages. So it's a three-tier examination, which started from the year 2017 or 18, I guess. It was started. It started from that year onwards. Uh, so basically, I'll be talking about the mechanical engineering because I am a BTech mechanical. So I'll be talking about the preparation journey of a mechanical engineer for UPSC Engineering Services examination. So let's go through about the strategy which we need to follow for the mechanical engineering branch in UPSC Engineering Services examination. So first of all, it's a three-tier examination, as I have already told you. So each stage or each tier needs to be taken individually. You can't club any two stages at any particular stage. So you need to focus your preparation stage wise. For example, if you talk about the prelim stage now, first of all, uh, preliminary stage is in the recent past, in 2 3 years, has become the most crucial stage of this examination. The cutoffs have suddenly gone from nowhere to the highest level. The vacancies in mechanical engineering are year by year dropping. So the competition level, the competitiveness of this examination is increased, and from a mechanical engineering point of view, the syllabus which I have seen for the last 2 3 years is rapidly being touched by the UPSC, which were not being touched in the earlier exam pattern before, when the pattern was still same. So what I mean to say is that UPSC is now trying to make sure that they cover
whole length and breadth of of the subject which they have asked in the syllabus, and those topics which have not been asked for the past 15 years are now being touched in the examination. So the importance of textbooks is increasing year by year, and you can't just rely on the previous year papers or some short notes and some coaching material notes. So you can't just rely on them. You have to study very deeply through the standard textbooks to cover your basics, because the preliminary stage demands your basics. प्रिलिमिनरी स्टेज की सबसे बड़ी एक जो खासियत है वो ये है कि आपके बेसिक्स वहाँ स्ट्रेंथ, बेसिक्स की जो स्ट्रेंथ है वहाँ पे वो टेस्ट होती है. तो बेसिक्स को डेवलप करने के लिए आपको टेक्स्ट बुक्स की रीडिंग करनी इज़ मस्ट नाउ, एंड विच अर्लियर वाज नॉट दैट मच मैंडेटरी, बट नाउ as I have seen for the last 3 years, the previous year questions are now not being asked and the new areas are now being touched. So you need to have the correct source of textbooks which you need to follow for prelims. प्रीलिम्स में सबसे बड़ी चीज़ है कि कैलकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है. इन मेंस कैलकुलेटर्स आर अलाउड, इन प्रिलिमिनरी कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड, एंड more importantly the numericals which are now being asked in the preliminary are almost equivalent to the level of mains. So it means that you have to solve all the numericals almost by a procedure by which you solve the mains paper. As I was telling you that the calculative part in the prelims is now the whole and soul the criteria of a selection. As I remember, during my year, the calculative part was very tough, and you need to solve the calculations without calculator at a very speedy rate. So, first of all, for preliminary stage, what I would recommend is you need to practice the manual calculation steps in a very rapid way. Take up the mains question papers, solve it as you solve procedurally in the steps. And when the final calculation comes up, try to solve those calculations by manual calculation itself. For example, if there is pi square into 0.7 into 0.9 into 3.14 like this, so break everything into numbers first of all. Take pi as 22 by 7 and not 3.14, because that will ultimately land you in a trouble. So try to minimize the complexity of the calculation first up. Try to open up everything, and then come and wherever possible the numerator and denominator cutting, wherever possible you can just simplify the calculations. When the final stage appears, for example 1634 upon 27, after simplifying all the calculations, multiplication, division, the cutting of denominator and numerator, when you reach the final figures, for example 22434 upon 21, and if it is not further resolving, then try to go for the final answer. That will save a lot of time for the calculations. That's how I did it. So that way you can adopt. The most important thing in the options of the calculative questions in preliminary stage is that the answers will always be clear. The answer you will get as only one option. For example, if the answer is 648 and you are getting the answer by manual calculation as 646 point something, so the answer is 648, which is being given in the option, and the options will always be like 720, 680, 620, 648. So there will not be any nearby options for you to be confused, because UPSC is making you to do the manual calculations. So they always will give the options clearly in the numerical part. So that is the big advantage which UPSC gives you, that you try to solve the questions with the procedure as laid down
ऑफ द मेन स्ट्रेटजी। जैसे आप मेंस में सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, वैसे आप सॉल्व कीजिए, एंड व्हेन यू अराइव द फाइनल आंसर, द आंसर विल ऑलवेज बी वन। तो यू वोंट बी गिवन द ऑप्शंस, two options which will be nearby. Yes, there will be some questions whose options will be nearby, but those questions will be those whose numerical or calculative part are much easier. For example, if you need to calculate, if any question has a calculation part of just one step, so there they might ask the accuracy of the answer you have to choose. For example, if any simple, if I can say, 22 into 7 into 4 upon 22 into 65. So if this is the only calculation which is being given in the numerical part when it sums up to, so in this part I guess yes, they might ask the accuracy of the answer. So in that part, then you need to solve the answer properly, and you need to find out the solution in the 3 decimal point, so that you can get to the final answer as near as possible to the option. Because I have seen that in some questions where the calculation is just one step, they give the options nearby. So do take care of that thing, and try to uh, practice the calculations by your hand for preliminary stage. So this is going to be my strategy for preliminary stage for technical paper. टेक्निकल पेपर्स के लिए आपको बुक्स रीडिंग ज़रूर करनी है, प्रीवियस ईयर पर डिपेंड मत रहिए। अब प्रीवियस ईयर का ज़माना गया, अब नई चीज़ें जो कभी आज तक जो काफ़ी लंबे टाइम से पूछी नहीं गई हैं, उन पे ज़्यादा फोकस यूपीएससी कर रहा है, तो उनको आप ज़रूर ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। Now I will touch upon the paper 1 of prelims, which is the common paper for all the streams, the general aptitude and engineering aptitude paper. इसका सिलेबस बिल्कुल नया है, इसको अभी इंट्रोड्यूस हुए 3 इयर्स हुए हैं, तो इसकी अभी जो स्कोप है सिलेबस की वो इतनी अभी इवॉल्व नहीं हुई है। तो इसमें जो भी सिलेबस है वो सिलेबस ऐसा है कि आप जितना भी पढ़ लें उस सिलेबस को, आप जितना भी उसको गो थ्रू कर लें, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ कमी ज़रूर लगेगी आपको। जैसे कोई भी सब्जेक्ट उसमें आप मास्टरी नहीं कर सकते। जैसे आप टेक्निकल पेपर को ज़रूर, बिकॉज यू आर स्टडिंग टेक्निकल फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, सो यू कैन गेट सम मास्टरी ओवर सम सब्जेक्ट्स ऑफ योर्स, बट जीएस का जो पेपर जो अब न्यू पैटर्न से डिज़ाइन हुआ है, उसमें आपको मास्टरी करना थोड़ा सा मुश्किल है। एंड उसके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जो रेलिवेंट कोचिंग के जो नोट्स हैं उनको आप ज़रूर रेफ़र कीजिएगा फॉर योर बेसिक्स टू डेवलप। एंड देन आफ्टर दैट यू कैन श्योरली गो फॉर देयर टेक्स्ट बुक्स। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट की टेक्स्ट बुक है, मेंटेनेंस की टेक्स्ट बुक है, स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी प्रैक्टिसेस की टेक्स्ट बुक है। देयर आर लॉट ऑफ टेक्स्ट बुक्स विच आर बीइंग अवेलेबल इन द मार्केट of the concerned coaching institute, so you can go through them. And more importantly, rather than going through textbooks, I would suggest that you shall always go for test series part, because test series से आपकी जो actual shortcomings and strength हैं वो आपकी known होती हैं, and you are surely bound to test your present knowledge which you have, and the shortcomings you are coming through in number of subjects. So वो आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से मैं प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा जो मैं आपको एडवाइस करूँगा वो ये है कि डो नॉट गो थ्रू द प्रीवियस ईयर एज मच, try to get an idea how the questions are being framed, but always try to cover your depth and length of your syllabus through textbooks, because textbooks ही रेफर करके आपको आपके बेसिक्स के ऊपर कमांड आएगी, and you will be able to get to know many areas which are still being not asked by the UPSC. तो प्रीलिम्स के लिए मेरी स्ट्रैटेजी यही थी, और मैंने भी यही फॉलो की थी कि मैं टेक्स्ट बुक्स मैंने काफ़ी रीड की थी, और टेक्स्ट बुक्स के वो एरियाज भी काफ़ी रीड किए थे जो अभी तक UPSC में आस्क नहीं हुए थे। तो ये एनालिसिस आपको खुद करनी है कि प्रीवियस ईयर पेपर में कौन सी चीज़ें UPSC ने पूछी हैं, नहीं पूछी हैं, और लास्ट 3 ईयर्स में जो UPSC ने किस तरह का ट्रेंड फॉलो किया है वो आप ज़रूर एक बार देखिए। लेकिन प्रीवियस ईयर पे बिल्कुल डिपेंड नहीं रहिएगा, टेक्स्ट बुक्स ज़रूर पढ़िएगा। टेस्ट सीरीज़ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स 1 की दीजिए, 2 की दीजिए, वो आपको डिपेंड करता है आपको अपनी एक्यूरेसी कितनी डिफाइन करनी है अपने आप को।
वो आप दीजिए, तो वो आप ज़रूर दीजिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करें प्रीलिम्स के लिए हमेशा मैनुअली सॉल्व कीजिएगा, कैलकुलेटर लेके मत बैठिएगा, वरना आपकी जो स्पीड है वो कभी डेवलप नहीं हो पाएगी एंड यू वॉन्ट बी एबल टू get the maximum benefit of the speed which you want to develop for the manual calculation for the prelims. So मेरी ये strategy prelims के लिए रहेगी. Now the next step comes is the main strategy, mains part आता है. प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए टेक्निकल, क्योंकि मेंस टेक्निकल जाएगा पूरा 600 मार्क्स का, 300 मार्क्स के 2 पेपर्स, पेपर 1 पेपर 2 डिवीजन होता है सिलेबस का, दैट यू नो बाय द सिलेबस विच यूपीएससी प्रोवाइड्स. टेक्निकल बुक्स जो मैंने फॉलो की थी और जो मैं रिकमेंड करूंगा लिस्ट में आपको, जो वो ये फॉलो करूंगा कि हीट ट्रांसफर के लिए आर.के. राजपूत एक बहुत बेनिफिशियल बुक है. फॉर एग्जांपल डायरेक्टली मेंस में पूछे जाते हैं डायरेक्टली. फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए मोदी एंड सेट एंड Bansal. These are the 2 books which are very nicely written for fluid mechanics. Fluid machinery के लिए Modi and Set and Bansal. Power plant machinery and power plant engineering के लिए R.K. Rajput. The best book. Solid examples directly come in UPSC mains examination directly. Renewable sources of energy जो कि newly added subject है, उसके लिए एक खान एक बुक है. एक्जैक्टली उसका मेरे को ऑथर का नाम याद नहीं है, बट इट्स खान. इट्स अ गुड बुक फॉर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. थर्मोडायनेमिक्स के लिए पी के नाग, सॉलिड एग्जांपल्स, डू गो फॉर इट. थर्मल इंजीनियरिंग वाला ये पार्ट मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है बुक्स का. डिज़ाइन पार्ट अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के लिए बीसी पुन्नामिया, बेस्ट बुक. थ्योरी ऑफ मशीन्स भंडारी एंड रतन, द बाइबल ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन्स. डिज़ाइन पार्ट, डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स के लिए आई विल से गो फॉर वीवी भंडारी, द लेटेस्ट एडिशन, गो फॉर दैट. सॉलिड एग्जांपल्स, जस्ट सॉलिड एग्जांपल्स एंड यू विल बी थ्रू विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स. मैकेनिज्म्स एंड मशीन्स, मैकेनिज्म्स जो है उसके लिए एक तयाल एक बुक है, तयाल बुक है, वो बहुत अच्छी है. एक तयाल बुक है, एक बहुत अच्छी बुक है. मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, बिकॉज उसमें काफ़ी बाइफर्केशंस हैं, कास्टिंग, वेल्डिंग, शीट मेटल, तो उसके लिए एक बुक आती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की, उसका नाम थोड़ा मैं शायद भूल रहा हूँ. एक बहुत ही क्वालिटी बुक है, उसमें ऑल द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस आर बीइंग गिवन. सो एक बार वो आप ज़रूर सर्च कीजिएगा इंटरनेट पे, बहुत अच्छी बुक है एक. उसका मैं ऑथर थोड़ा भूल रहा हूँ, बट उसके लिए भी आपको थोड़ा टेक्स्ट बुक रेफर करनी पड़ेंगी, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस विच आर बीइंग आस्क्ड इन द पेपर 2 of mains in mechanical engineering. Industrial engineering के लिए तेलसंग is a very nicely written book जो मैंने फॉलो की थी. Industrial engineering हो गया. Maintenance engineering, yes, there was a book of maintenance engineering. I'm just forgetting the author, but if you will type that on the internet, you will surely find a book on maintenance engineering, which is the only book available in market and which is a very quality book, and it covers the whole syllabus which UPSC demands. Now there is a new syllabus which is being added in technical paper 2 is the mechatronics and robotics. इसका मेजर मैं आपको फुल तो नहीं कहूँगा कि फुल परसेंट कवर होगा, but yes, 80% syllabus of UPSC and the questions which are being directly asked from them as well is covered in R.K. Rajput book. R.K. Rajput book में 80% syllabus and there were a few questions which were being framed out of it only is R.K. Rajput. So it's a very good book. Do try to follow this book and the book list which I have given you. Do try to follow these book lists for your preparation in mechanical engineering, and you surely are going to get your basics very well laid down for either preliminary stage or main stage. Now I come to the preparation strategy of mains. Now what I did was in mains for paper 1, if I'll say, there are 2 parts, part 1, part 2. You need to attempt 180 marks from either of the part and 120 from the other. So what I did was there is a bifurcation of syllabus in parts, part 1 and part 2. For example, in part 1 you will be getting thermodynamics, heat transfer, IC engines. So this is the part which comes in part 1. In part 2, fluid machinery, power plant machinery, power plant engineering, renewable sources of energy. So what I did was
I prepared the part 2 syllabus more comprehensively. I attended each and every test series of it. I prepared them thoroughly from the textbooks, past year papers, the textbook questions. I followed each and everything. So that I had that portion comprehensively covered. And I attempted 180 marks from that part and 120 from the remaining from the part 1 part. That's how my strategy for paper 1 in mechanical engineering was. And because I had more confidence of myself in those subjects which appear in part 2, so I prepared in that way. So always follow your strength, always follow your passion. In which subjects you have a great passion, and which subjects you can be more commendable, so that those subjects only you should take into account, and you should prepare those subjects comprehensively, in depth, so that whatsoever question being asked or framed, you are able to answer it in your own way. And that's what I did for the part 1 for paper 1 in this way. When I come to paper 2 also same bifurcation. In part 1 section A, the design part syllabus is there, mechanisms, theory of machines, design of machine elements, and strength of materials. In part 2, the remaining mechatronics, robotics, manufacturing, industrial, maintenance engineering was there. So in that paper as well, my part 1, I made sure that I had part 1 covered in whole, in comprehensively, so that I will be able to attempt 180 marks from that, and the rest 120 marks I attempted from the part 2 of the paper 2. So you won't believe that by this strategy, I was able to score 230 plus out of 300 in paper 1, and I almost scored 195 out of 300 in paper 2. And the bulk of my marks which I got was from those strong areas which I prepared, and from those parts in which I attempted 180 marks. So you can understand, all those who are preparing, the aspirants, I will tell you the one thing: just stick to your strong points. अपने strong points पे आप stick ज़रूर कीजिए. Stick करने का मतलब ये नहीं है कि आप जितना टाइम उनको दे रहे हैं उतना टाइम आप दूसरे को दे रहे हैं, नहीं. जो आपके strong parts हैं उनको आपको you have to give more time to them. Dedicate more time to those than to those जहाँ से आपको कम attempt करना है. So always stick to the plan. Always try to make plans in such a way that you give maximum time to those subjects जहाँ पे आपकी strength already बहुत ज़्यादा है, और जहाँ पे आपने अगर कुछ और extra time दिया तो आप अपनी उस strength को और एक अलग level पे ले जाके उसको इतना पक्का कर लेंगे कि उसमें से कोई भी question frame होता है. See, exact question तो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा. Exact question आपको कहीं भी repetition में नहीं मिलेगा. There will be a bit of framing in every question. Even if it is taken from the previous year, you won't be getting the same question type. So you should be able to do that question. Try to develop the basics in such a way. So always try to focus on the strong parts of yours, and that's what I did for mains. And I scored almost 422, 425 marks out of 600 in mains, because at the time of preliminary stage, out of 500, I was just 7 or 8 marks beyond the cutoff. So it was my mains which made me go to a next level. Got the selection in UPSC engineering services finally. So now I will be talking about the third stage. The third stage is about the interview. An interview is known as the personality test. It is to judge your personality, not your knowledge. First of all, बच्चे पूछते हैं कि सर क्या क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या आप वो सारा ऑलरेडी अपने प्रीलिम्स एंड मेंस में करके आ चुके हैं. That's what the interviewers are always looking for you. They are trying to gauge your personality rather than your knowledge. So first of all, the most important thing in interview stage is your DAF, Detailed Application Form, जो मेंस के बाद जिनका सिलेक्शन हो जाता है इंटरव्यू के लिए, उनको फिलअप करना पड़ता है बिफोर दे गो फॉर इंटरव्यू. डैफ में वो चीज़ें भरिए जो आपको इन रियल आती हैं, जैसे आपका पास्ट एक्सपीरियंस, आपकी हॉबीज़, आपने कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी तक कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में हैंडल की हैं, डिटेलिंग ऑफ दैट, योर सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ विच यू हैव पार्टिसिपेटेड, और सम अदर
events which you have organized or whatever responsibilities you have had. Try to mention those only which you originally have. Do not fake anyone. Do not fake the interviewers because they are very smart. They will always catch you by asking you some those questions which you won't be able to answer. पैनल में चेयरमैन जो होगा, इंटरव्यू के पैनल में चेयरमैन जो होगा, चेयरमैन आपके डीएएफ को ज़रूर खोल के पहले आपसे इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछेगा. सो आपका डीएएफ फॉर्म में जो आपने फिलअप चीज़ें की हैं उसको आपने कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करना है फॉर इंटरव्यू. दैट इज़ दी होल एंड सोल ऑफ योर इंटरव्यू फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड, जिनका पास्ट एक्सपीरियंस है, just prepare your past experience job and you will be thrown 70% of the questions of total at you from your technical background of whatever past experience you have had. So that's the second point for the past experience persons. For the freshers, I will say prepare 5 technical subjects of your mechanical engineering, ऐसे जिन आपकी पकड़ अच्छी है, जिनके आपके बेसिक्स सबके स्ट्रॉन्ग अच्छे हैं, डेवलप्ड हैं. बिकॉज आपसे वो ज़रूर आपकी चॉइस का पूछेंगे. जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो बहुत बेसिक्स हैं, बहुत ही बेसिक्स होते हैं. जैसे अगर मैं आपसे एग्जांपल कहूँ किसी एक बीम का, वो आपसे शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जस्ट फ्री हैंड बना के दिखा सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं. जैसे मेरे से थिक सिलेंडर के जो स्ट्रेसेस होते हैं, विच ऑल आर द स्ट्रेसेस बीइंग डेवलप्ड इन द थिक सिलेंडर, वो मेरे से बाय ड्राइंग पूछा था. कहाँ कहाँ किस डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कमफ्रेंशियल. तो ऐसे बेसिक चीज़ें आपसे ज़रूर पूछी जाएंगी. और इट इज़ नॉट अबाउट फार्मूलाज एंड द लॉन्ग थियोरेटिकल एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन. फॉर दैट यू हैव टू रेफर द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स जो आप अपने प्रीलिम्स एंड मेंस की स्ट्रेटजी, जो आप उसमें स्ट्रेटजी में अपने इन्वॉल्व करते हैं बुक्स, वही बुक्स में से आपको डेफिनेशन, सम बेसिक फार्मूलाज, स्टेप्स थोड़े आपको वो ज़रूर रिवीजन में लेके जाके करने होंगे फॉर इंटरव्यू. सम बेसिक्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक्स विल ऑलवेज बी रिक्वायर्ड टू बी revised by you, and that is a very compulsory thing for you as well to do. So overall, these are the 3 stages, and how you are going to approach these 3 stages. I have given you the brief about all the 3 stages, how you shall prepare yourself for it. एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, चाहे आप किसी भी स्टेज में प्रिपेयर कर रहे हैं, कभी भी किसी भी नेगेटिविटी को अपने अंदर कभी भी मत आने दीजिएगा. कि इट इज़ बाउंड दैट जब भी आप प्रिपेयर करेंगे आपसे कुछ चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी तो आपके अंदर वो नेगेटिविटी ज़रूर आएगी कि हाँ, मे बी आई एम नॉट द वन who will be able to clear this examination. It's not that. Examination is meant for that one particular seat. मुझसे कई लोग पूछते हैं कि सीट्स कम हो रही है मैकेनिकल में. आई नो सीट्स कम हो रही है मैकेनिकल में, बट you are aiming for that one particular seat, and for that you need to raise your level. No one will come to pull you up. You yourself have to pull yourself. And in your journey, it's your loved ones who always are there with you to help you up. मेरे केस में मेरी मदर, मेरी सिस्टर ने, मेरे गुरुजी ने बहुत मेरा साथ दिया. ऐसी सिचुएशन भी आई कि जब मुझे भी लगा कि हाँ, मैं शायद नहीं हो सकता मेरा बैकअप. एंड ऑल्दो आई हैड अ प्लान बी इफ अगर नहीं होता है, बट यू ऑलवेज हैव दैट गिल्ट. थोड़ा लगता है कि आप यहाँ तक पहुँचे और आप फिनिश लाइन क्रॉस नहीं कर पाए, तो उस गिल्ट को कभी मत रखिएगा. हमेशा गो फॉर द किल. मतलब आई ऑलवेज वेंट टू गो फॉर द किल. हमेशा आई वेंट कि तो आर या पार, करेंगे तो अब करेंगे, नहीं तो कभी नहीं करेंगे. और यू आर ओनली द वन, ऐसा नहीं है, यू आर ऑल्सो द वन. तो प्रिपरेशन करते वक्त हमेशा ये सोचिए कि आप भी एक हैं, ना कि आप ही एक हैं, जिससे आपका जो एक इगोइस्टिक लेवल है वो कंट्रोल में रहेगा. एंड चाहे आपकी प्रिपरेशन लेवल अच्छी भी क्यों ना हो, ऑलवेज ट्राई टू से टू योर सेल्फ, आई एम ऑल्सो द वन एंड आई एम एमिंग फॉर दैट वन सीट, वट एवर द रैंक में बी. And with this attitude you will surely be able to go through smoothly. And जिसे कहते हैं कि घड़ा एक बारी में नहीं भरता है, it is by drop. So daily dedicate your time, your energy in such a way that you are always going up and you are always enriching your knowledge in the process as well. And those who dare to step a back or two, जो 1-2 कदम पीछे हटके
लंबी छलांग मारने को तैयार होते हैं, जीत होने की होती है। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट विनिंग फंडा जो मैं सबको देना चाहूँगा, कि जो 2 कदम पीछे हटने को तैयार होते हैं, अपनी लाइफ में 2 कदम पीछे लेने को तैयार होते हैं, सबसे लंबी छलांग वही मारते हैं। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनके इंस्पायरिंग कोट्स मैंने पढ़े, एंड उनके इंस्पायरिंग कोट से ही मुझे इतनी एनर्जी मिली कि मैं अपनी प्रोसेस को, अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखूं। तो आप भी एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर, एक मोटिवेशनल फिगर को हमेशा अपनी लाइफ में रखिएगा, जो आपके लिए हमेशा एक वो लेटर की तरह काम करें, जिनके थॉट्स एंड कोट्स पढ़ के आप, और उनके इंस्पिरेशनल स्टोरीज एंड इंस्पिरेशनल लाइफ जर्नी को आप देख के आप अपने आप को भी उस लेटर की तरफ हमेशा अप्रोच करें। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अबाउट my strategy for engineering service examination for mechanical engineers. From my side, at last, I would like to thank UPSC Time India for inviting me for such an interactive session with the audience. I hope the audiences who have joined must have gained a leaf out of my book, a leaf out of the book of the, as far as the strategy point of view is concerned for the mechanical engineers for engineering service examination. And uh, I wish all the aspirants are preparing all the very best. Uh, uh, I'll surely be very much happy to share my strategy